एप्पल ने WWDC में अपने लेटेस्ट iPhone SE को लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या लेटेस्ट iPhone SE 2.0 अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत, आप देखिए टेक्निकल पैरी यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब iPhone SE के सारे फीचर्स जान लेने के बाद सवाल ये आता है, क्या हमें 42,500 की प्राइस पर iPhone SE लेना चाहिए या नहीं। तो इसका एक आसान जवाब कुछ ऐसा है कि अगर आपने कभी एप्पल के iPhones को ट्राई नहीं किया है और आपको एक बजट iPhone की तलाश है, तो आप iPhone SE या तो iPhone XR की तरफ जा सकते हैं।
और अगर आपको आपके 42,500 में एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लेना है तो आप OnePlus 8 या तो सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को भी ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।